So, in this video, we'll learn how to build our backend. उसको कैसे थोड़ा स्ट्रक्चर किया जाए, उसको कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। ओके, अगर तुम्हें याद होगा तो ये हमारा प्रीवियस कोड था जिसमें हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था और एक थोड़ा बहुत ए पे एंड पॉइंट्स क्रिएट किया था। ठीक है ना, इसमें ना लेट्स अज्यूम करो तुम्हारे पास लाइक अराउंड 20 एंड पॉइंट्स है। तो यू कांट जस्ट राइट 20 एंड पॉइंट्स हियर, राइट? तुम 20 एंड पॉइंट यहाँ नहीं लिख सकते। फिर यहाँ पर तो एक सिंगल लाइन लॉजिक है, विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ लॉजिक इनसाइड इट, राइट? कॉम्प्लेक्स लॉजिक, डेटाबेस को हैंडल करना, ऑल दैट। अभी तक तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट भी नहीं किया है। नो, डेटाबेस को कनेक्ट करोगे तो उसका कनेक्शन, ऑल दीज थिंग्स एक ही इंडेक्स फाइल में तुम मेंटेन नहीं करते हो। फॉर दैट वी नीड टू स्ट्रक्चर आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अभी इसको स्ट्रक्चर करने के लिए आई टेल यू द फाइल स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। पहला फोल्डर है, इट्स कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में क्या आता है? मॉडल्स में आता है तुम्हारा सारा डेटाबेस रिलेटेड मॉडल्स। तुम्हारा यूजर का जो मॉडल होगा वो कैसे होगा, तुम्हारा अगर पेमेंट्स का मॉडल है तो पेमेंट्स का मॉडल कैसे होगा, ट्रांजैक्शन का कोई मॉडल है तो वो कैसे होगा, अगर कोई पेज है तो उस पेज का अगर तुम कुछ मॉडल बना रहे हो तो वो मॉडल कैसे होगा। दैट इज, तुम्हारा डेटाबेस में जो डेटा रहेगा उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हाउ विल यू स्ट्रक्चर द डेटा। दैट कुड बी इधर यूजिंग नो एसक्यूएल और एसक्यूएल, कोई भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में वी आर गोइंग विद नो सीक्वल, नो एसक्यूएल। ओके, नो सीक्वल और नो एसक्यूएल, एनीथिंग whatever you feel comfortable with. Next, second is called routes बोलते हैं। थर्ड आता है कंट्रोलर, कंट्रोलर्स। देन CONTR controllers। ठीक है, now we can also create a folder called middleware। ये पूरा प्रोजेक्ट का प्रेमिस है तुम्हें बेसिक समझाना। ये तुम्हें मर्न एप्लीकेशन बिल्ड करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू द बेसिक टूल्स दैट विल बी रिक्वायरिंग टू बिल्ड योर SaaS प्रोडक्ट। ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो हैव अ डॉट कॉन्फिग फाइल तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे तुम अपना सारे कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो ना। तो यहाँ से मैं इन सबको हटा दूंगा। हमारा जो कंट्रोलर होगा दैट विल कंटेन द मेन लॉजिक ऑफ योर एप्लीकेशन। सो तो आई एक्सप्लेन व्हाट थिंग्स आर। राउट के अंदर लेट्स कॉल इट, आई एम नेमिंग इट एज बेसिक डॉट जेएस। ठीक है, तो राउट के अंदर जो मैंने नेम दिया होगा सेम नेम विल गिव इट इन कंट्रोलर एज वेल। Understand why a bit into the video. Now what will you do? What you will do is अपने राउट के अंदर आओगे, उसके अंदर तुम इसको पेस्ट करोगे। तुम बोल रहे हो एक्सप्रेस इंपोर्ट कर रहे हो, फिर यहाँ से तुम राउटर इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सप्रेस राउटर। नाउ वॉट एवर राउट्स यू वांट टू क्रिएट, लेट्स से बेसिक राउटर के अंदर मैं तीन बना रहा हूँ। वन आई कॉल इट एज राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट, एक हैंडल करेगा जिसका नाम होगा गेट। राउटर डॉट पोस्ट टेस्ट, स्पेलिंग राउटर डॉट टेस्ट। ओके, तो तुमने ये तो डाल दिया कि ये राउट क्या करता है। वी ऑल्सो नीड टू एक्सपोर्ट इट।
तो अभी तुमने ये डाल दिया, बट व्हाट डज दिस थिंग डू? देयर इज नो लॉजिक हियर, राइट? तुम यहाँ पे लॉजिक ऐड करना पड़ेगा तुम्हें. द लॉजिक पार्ट इज वेयर योर कंट्रोलर कम्स इनटू प्ले. ठीक है? यार कंट्रोलर में तुम अपना लॉजिक लिखोगे. यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ports dot, I'm gonna call this function basic test get async request response i catch ब्लॉक के अंदर console.log error on dot send or मैंने ये जो है यहाँ पे फंक्शन लिखा है. नाउ आई इंपोर्ट दैट फंक्शन हियर. const fire controllers basic. मेरा फाइल का नाम क्या है? बेसिक. यहाँ पे मैं बेसिक टेस्ट को डाल रहा हूँ. So basic test got added here. So similarly, I'm gonna create for put and okay. So basic post post put save. यहाँ पे हम import करेंगे basic put basic post basic post basic put. Good. Has been saved. Now, so do you think if I try accessing those endpoint, क्या है? That is test. Okay, let me rename it here. A test वाला हटा देता हूँ so that you don't get confused between them. I can remove postman. ठीक है, postman हमने खोला. Let's run the terminal. Server is running on localhost 3000. Post request अगर मैं हिट करूंगा तो एरर आ रहा है, cannot find post test. क्यों? I mean, हमने डिफाइन तो किया है ना. अगर हमने डिफाइन किया है तो आ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज हमने इंडेक्स फाइल में वी हैव टू टेल कि डोंट यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू मेंशन इट इन द इंडेक्स फाइल. What we do is come here, type app dot use जो भी तुम्हारा एंड पॉइंट में चाहिए. want it just to be a slash, it can be that, or let's call it as मेरा बेसिक API करके मान रहा हूँ ना, तो I'm gonna call it as BASIC basic require के अंदर से path for route. पूरा पीछे चला गया. routes slash basic. Okay. So I'm gonna save it here. Let's go here. Let's provide basic slash क्या था? टेस्ट था ना. टेस्ट नहीं आता, एरर आता है. क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट रीस्टार्ट द सर्वर. तुम्हें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एवरी टाइम यू मेक एनी चेंजेस. वी गेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर कोड. तो लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास एक क्लाइंट फेसिंग है
और अज्यूम करो तुमने एक अपने लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, मे बी यू कैन यूज डैश स्लैश डैशबोर्ड, फिर उसका जो भी एपीआई होगा वो ऐसे होगा। या फिर अगर तुम्हारे पास यूजर्स है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अनदर कस्टमर्स, देन बी यूजर स्लैश कस्टमर स्लैश, ऐसे डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर कोड। नाउ अभी बात आती है हाउ डू यू ऐड अ डेटाबेस इनटू दिस, बिकॉज एक डेटाबेस की तो जरूरत होगी ना यार तुम्हारा अपना डेटा स्टोर करने के लिए। दैट्स वेयर वी यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज mongoose। mongoose mongoose npm, if you type get npm mongoose, come here, click on install, stop the server, install it, mongoose get installed। ये जो है तुम्हें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू connect with your database as well as create a proper schema structure। ये तुम्हें MongoDB थोड़ा सीखना पड़ेगा in order to understand this part of the code, because I cannot explain this entire thing because MongoDB in itself is a big topic। ठीक है, now let's make a basic user schema। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूजर स्कीमा कैसे बनाया जाए, just ask ChatGPT, just type give me a user, give me a user schema, तुम टाइप करोगे तो चैट जीपीटी विल गिव यू द एंटायर स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, या आई एम गोना कॉपी इट फ्रॉम हियर। हम जाएंगे अपने मॉडल्स में, मॉडल्स के अंदर जाके विल मेक यूजर में कोई मॉडल बनाते हो मेक इट एज कैपिटल, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल नहीं चाहिए, रोल यस, लेट्स प्रोवाइड अ रोल फॉर आवर यूजर। सो व्हाट इज टेलिंग यू, ईमेल यूजर नेम जो है वो टाइप स्ट्रिंग है, इट्स रिक्वायर्ड, इट हैज टू बी यूनिक, यस। पासवर्ड इज टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड यस। रोल इज डिफॉल्ट वैल्यू तुम दे रहे हो यूजर या फिर एडमिन, हम यूजर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रेडी है तुम्हारा यूजर का मॉडल। नाउ अभी इस यूजर मॉडल को विल हैव टू यूज इट, राइट? हाउ डू वी यूज इट? तो अगर तुम बेसिक कंट्रोलर में आओगे, तो यहाँ पे हम जो है वी कैन क्रिएट अ यूजर। ठीक है, लेट्स री स्टार्ट रीनेमिंग दिस। बेसिक को बेसिक ही रहने देते हैं, बेसिक के अंदर विल चेंज इट टू गेट यूजर्स, के अंदर हम इसको बोलेंगे यूजर, हम यूजर डेटा पास करेंगे, पुट दिस टू अपडेट यूजर। ओके, नाउ हाउ डू वी यूज इट? पर हम इसको सेव करेंगे ना। फर्स्ट अगर मुझे यूजर मॉडल यूज करना है, डेफिनेटली आई हैव टू इंपोर्ट द यूजर का information, right? Like that's the bare minimum I need to do. That user model I need, that is const user model को मैं import करूंगा, require model user model हमारे पास आ गया। Let's start with the post request। ठीक है, let me just move the post request on top, post request। So we need to take the information ना from the request, से हमें यूजर इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा ना। फॉर दैट वी नीड टू यूज बॉडी पार्सर, मतलब जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो हमारे पास डेटा आएगा HTTP में, पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी के थ्रू हमारे पास डेटा आएगा, बॉडी ऑफ टाइप
फॉर्म डेटा नहीं, फॉर्म डेटा नहीं चाहिए, रॉ में करे। रॉ में लेट्स डू इट एज जेसन। ठीक है, इट्स गोइंग डाउन। हाँ, रॉ में विल डू इट एज जेसन। सो इफ यू कम हियर, एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, यूज एक्सप्रेस ही हमें देता है। what to do is app dot use dot is now। so ये पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी के थ्रू हमारे पास डेटा आता है। सो अभी क्या जिसको ना console log it, console dot log request dot body। I'm gonna save it, stop the terminal, restart it, and let's go and give it a try। uh, क्या बोल रहा है, पोस्ट ओके बॉडी टाइप, ओके वी चेंज द नेम नो टू यूजर। सो पहले तो हमें बॉडी में डेटा ऐड करना पड़ेगा, यूजर, फिर यूजर, ओके लेट्स जस्ट गिव समथिंग रैंडम, blah 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 blah, send। ओके, सो डिड आई गेट, यस सी हमारे पास डेटा आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हम वापस कंट्रोलर पे आते हैं, हम डेटा यहाँ से निकालते हैं। कैसे, कॉन्स्ट क्या निकाल रहा हूँ, आई वांट नेम एंड क्रिएटिंग नो पासवर्ड चाहिए फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं नेम और पासवर्ड निकाल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आई नीड टू क्रिएट अ यूजर मॉडल, दैट इज कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स न्यू यूजर, इसके अंदर you can end up passing your values, that is name as name and password as password। so we end up getting user dot save। now सबके बीच में if someone is wondering कि ये सब तो ठीक है but we never connected to a database only, like you're not connected to a database। well if you are thinking like that, very good, we did not connect to a database, we need to connect to a database। so तुम्हारे पास like option है one, when you're testing you can run it locally, तुम अपना एक MongoDB locally रन कर सकते हो, which is okay। second option is when you're in production environment, that is जब तुम अपना होस्ट करते हो तब you can use DigitalOcean का, okay see DigitalOcean का भी databases, they provide databases। you can go here, create a database for $15 and MongoDB का create a database and you can start using it। yes, but I don't want you to waste your money here। there's another service called Mongo Atlas। तुम इनिशियली प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, बाद में if you want you can shift to DigitalOcean या फिर AWS or something like that। initially they give you a free trial, online है तो you don't need to set up anything, you just need to log in, sign up, register। ठीक है, once you register you'll go into settings and you'll get something called as connection string। I'll just show it to you, wait। okay, so this is how it will look once you log in। तुम्हारे पास ऐसा नहीं दिखेगा, it will ask you to create a new cluster। ठीक है, but I already have a cluster so I'm not creating one। you can go like ऐसे तुम पेज ओपन होगा, यहाँ पे you can only create one project on free trial, वरना you have to start paying for it। ठीक है, just create a new project, get inside it, will load, फिर ये यहाँ पे कनेक्शन करके आएगा, क्लिक ऑन इट, इट लास्ट टू कनेक्शन किस चीज़ के लिए तुम्हें कनेक्शन चाहिए, फॉर ड्राइवर, कंपोज, शेल, VS कोड में एट लास्ट व्हाट इज इट फॉर, तुम्हें चाहिए
फॉर ड्राइवर बिकॉज तुम नोट जे से ऐसा कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, राइट? ना इट विल गिव यू कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है? यहाँ पे जो पासवर्ड होगा इसकी जगह पे तुम रिप्लेस करोगे अपना पासवर्ड. I'll copy this from here. I'm gonna close this and I'm gonna close this. ठीक है? Let's go back to our this thing index file. अभी के लिए टेम्परली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा for once I paste it there, let's give me the let's set up Mongo. Okay, so let's first import mongoose into our project and create mongoose का connection object. So it after express यहाँ पे इतने सारी चीजें तुम पढ़ लो कि ये क्या करता है करके. देन कनेक्शन से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. देन वंस इट्स कनेक्टेड ओपन करो करके हम बोल रहे हैं. नाउ we know I know for a fact that this thing is gonna fail because mongo url जो है that does not exist. अगर तुम्हारा लोकल होता yeah, so this is how you would keep it. अगर मैंने अभी यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया एंड बाई चांस अगर मैंने गिटहब पे पुश कर दिया, अगर समथिंग हैपेंस और समवन गेट्स एक्सेस टू माय कोड, मेरा पूरा डेटाबेस को उड़ा सकता है या my entire system is at risk. That's why you use something called as environment variables. So तुम .env फाइल क्रिएट करोगे तो हमारा जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, that could be your connection string, that could be your information, that could be your tokens, be secrets, जो कुछ भी होगा तो भी हमारा होगा, तुम इसके अंदर रखोगे. नाउ you need to install the package for it first. Let's go to here and .env npm. Okay, downloaded. It will also like if you scroll down तुम्हें कोड भी दिखेगा कि कैसे करते हैं करके. Come back, stop the server, copied that or what? By mistake. Copy. Paste. And this is the line of code you need to add in every file that uses .env. जिस भी फाइल में तुम .env यूज कर रहे हो उस फाइल में तुम्हें पेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है? I'm gonna create a dummy value. Dummy equals इसको मैं यहाँ पे console.log करूंगा. console.log. This is how you access process.env. जो भी तुम्हारा वैल्यू का नाम होगा. That's how you access your values. Save it, and if I run it, shouting. Why is it shouting? It's shouting because okay, यहाँ पे cry कर रहा है. Doesn't know what this is. Okay, अभी एक सेकंड के लिए I'm gonna just comment that out. Test secret आ रहा है. This is how you keep your secret. So I'm gonna stop recording for a second and I'm gonna add my password there. Added my password to that env string. ठीक है, मैं यहाँ से अभी let's clean this up a bit. ये निकालता हूँ, ये console हटा देता हूँ. Make sure your password is long and not something you'll remember. Generate a random string value just like I have done. एक random long 10-15 कैरेक्टर जितना रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करो ताकि कोई उसको हैक ना कर पाए या गेस ना कर पाए. ठीक है, वंस इट्स डन, इफ यू ट्राई टू कनेक्ट इट,
will show server is running connected to DB. तो ये हमारे DB को अच्छे से कनेक्ट हो रहा है. So now let's go here. Okay, यहाँ पे ना string पे end पे you'll have to mention your database. I'm gonna call it as SAS करके, ठीक है? This is the database inside which you will store. You'll also update the same thing in the string. Okay? So yeah, let's remove this and let's get this thing up and running. And watch is undefined. It's up and running. Close the file because it is a secret. So let's go to the controller. Okay, new user, username, password. Okay, seems fine to me. किसी को कुछ गलत लग रहा है क्या? Something wrong? If you would have said यहाँ पे await आना चाहिए, would have been right because ये एक नेटवर्क कॉल है. नेटवर्क कॉल कर रहे हो तो एसिंक्रोनसी यूज करना पड़ेगा. ठीक है. Now let's just change this thing. User created. Let's go here. यहाँ पे हम इसको देते हैं ये वैल्यू. कर यार, बंद हो गया क्या ये? अरे ये क्या हो रहा है? ओके, हाँ, तो हम देते हैं नेम एज NAME name as Dhanush and password as password, the most secure password ever created. Okay, let's run this. Okay, what what happened? Did we not save it and rerun the server? Okay, यहाँ पे कुछ तो error आया. Let's see what the error is. क्या error आया यहाँ पे? Validation error. Path username is required. क्या ये username क्यों बोल रहा है? Because हमने यहाँ पे username करके define किया था. See? So what happened? My server just crashed. मेरा server crash हो गया. So if I try to send another request, gone, down, not accessible. So what did we learn? We learned we need to learn how to handle our errors. अगर तुम ठीक से अपना error handle नहीं करोगे तो it will end up taking down your entire server. ठीक है. सी, तो अगर यहाँ पर हमने ट्राई कैच डाल के रखा था इसलिए द सर्वर डिडंट गो डाउन. अगर हमने ट्राई कैच निकाल देते तो इट वुड हैव गॉन डाउन. इफ आई रिमूव दिस एंड इफ आई रिमूव दिस, सेव दिस, हमने नहीं किया है तो इवन इफ आई सेंड इट अगेन द सर्वर शुडंट क्रैश, इट वोंट क्रैश. I'll do ctrlc and stop it and restart it. Now since it's not being handled, if I send it, it should crash. Gone. ठीक है. Send again, gone, no response, could not find anything. ठीक है. So let's add back the validate को add करते हैं. Now यूजर नेम चाहिए, नॉट नेम. सो नेम हमारे पास से आ रहा है, सो मेक इट एज यूजर नेम. नाउ लेट्स ट्राई रनिंग इट. यहाँ पे हम जाएंगे, रन करेंगे. सेट यूजर क्रिएटेड. ओके, लेट्स सी इफ द यूजर इज एक्चुअली क्रिएटेड. इफ आई गो इनटू दिस थिंग एंड हाउ डू आई ओपन इट? अरे 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 अरे, database. ओके, या ब्राउज कलेक्शन. यहाँ पे इतना सारा. ओके, देखो SAS का आया है. See, these are all the different things we have worked on. User,
यूजर के अंदर आ गया हमारा यूजर नेम और पासवर्ड. नाउ इज इट अ गुड थिंग टू सेव योर पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट? नो इट इज नॉट. यू नीड टू एनक्रिप्ट योर पासवर्ड. ऐसे प्लेन टेक्स्ट में सेव मत करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर. ओके, व्हाट हैपेंस इफ समवन विद द सेम यूजर नेम ट्राइज टू स्टोर अगेन? समथिंग वेंट रॉन्ग. यहाँ पे कुछ तो एरर दे रहा होगा. क्या एरर है? डुप्लीकेट एरर. की, ये वाला की ऑलरेडी यूज्ड है और समवन फिर से यूज कर रहा है. सो ये हो गया एक तरह का एरर. व्हाट इफ मैंने पासवर्ड फील्ड ही पास नहीं किया होता तो समथिंग हैपेंड, इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग ओनली. क्यों? यहाँ पे अटक गया, कुछ तो हो गया. समथिंग डिडंट वर्क. लेट्स गिव कॉमा. ठीक है, सी द एंटायर प्रेमिस इज फॉर यू. कॉपी पेस्ट करना नहीं होता. कोड तुम्हें दिखा, ओके ठीक काम कर रहा है, नहीं. चेक, ट्राई ब्रेकिंग थिंग्स. देखो चीजें ब्रेक होती है कि नहीं ब्रेक होती है. समथिंग वेंट रॉन्ग. व्हाट हैपेंड? ये वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है बिकॉज पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, नहीं मिला. ठीक है, फिर से भेज रहे हैं. ठीक है, इट्स क्रैशिंग. मतलब एक बार वर्क होता है फिर नहीं होता. सो हाउ कैन यू बेटर हैंडल इट? चेक गॉट द वैल्यूज और नॉट. दैट इज इफ name equals null or password equals null, then return response dot send please provide name name or not provided. ठीक है, now we are handling this scenario. So what happens now? I send it now. It says name or password not provided. ठीक, see, server doesn't crash. तुम्हें सोचना पड़ेगा कि what are the things that could crash your server, which could bring down your things, right? Now ये हो गया तुम्हारा बेसिक, एक यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लिया जाए. नाउ आई ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू गेट यूजर नेम एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? सेम थिंग कैन बी डन हियर. जो गेट रिक्वेस्ट है इसमें मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ. const data equals await user dot find. to find सारा डेटा रिटर्न कर देता है. I'm gonna do console dot log जेसन. हम रेस्पॉन्स जो है जेसन भी रिटर्न कर सकते हैं. लेट्स ट्राई दिस. लेट्स डू अ गेट रिक्वेस्ट. हमने वो वहाँ पे यूजर्स करके लिखा था. लेट्स सी. गेट दिस अ बेसिक गेट टेस्ट. ये क्या है यार? Oh, we didn't restart the server. Okay, there's a package called as nodemon which you can install to okay. Now what nodemon does is every time you make a change in your folder, automatically it restarts the server. So you don't one less thing to worry about. Okay, now get request के अंदर let's push it. See, we got our data. Is it a good thing to return the password या hashed password? No, it's not. So learn how to not send it back. Learn how to hash your passwords. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक्स ऑफ हाउ टू सेट अप योर डेटाबेस एंड हाउ टू बिल्ड योर बेसिक एपीआईज. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हाउ डू यू वर्क विथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन और मिडलवेयर.